Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host, Shivangi Mishra. Let's take a look at what made news this week. POK under miserable food crisis demands reopening of trade routes at LOC. Indian Army organized basic computer training for women and girls in border villages of Jammu and Kashmir. Construction of a bridge connecting around 80 villages in Pulwama and Budgam districts nears completion. Trout fish farming becomes popular in far-flung areas of Rajouri district. And in our special section of Incredible India, 52nd Rose Festival celebrated in the city of Chandigarh. The illegally occupied territory of POK is undergoing a miserable food crisis. With no wheat flour, rice and other essentials, the residents have taken to the streets against the Pakistan regime. An exiled activist from POK has revealed that people are marching towards the line of control, demanding reopening of trade routes with the Indian administration. He perceives a refugee crisis is building up along the LOC and said the residents of POK are ready to brave Pakistani bullets and will organize sit-in along the line of control. We have a report. Pakistan-occupied Kashmir is facing an unprecedented shortage of wheat flour and other commodities. The people are holding Islamabad and its stooge administration in POK responsible for the acute food shortage the region has been witnessing for nearly a year. An exiled activist from POK, Amjad Ayub Mirza, has claimed that people are marching towards the line of control and demanding reopening of the trade routes with Indian administration to get some relief during the ongoing food crisis. The importance of these protests is that they are taking place right next to the line of control in Titri Note and Madarpur. There were massive protests, there is no flour, there is no wheat, and the next stage seems to be a march towards line of control, because people are now suffering so much that they see no choice other than to demand that the line of control trade routes should be reopened so that they can go to Poonch and Rajouri and buy wheat, rice, tea, sugar and other daily essentials. The activist also revealed that people are not afraid of Pakistani bullets and are braving their way to the line of control to organize sit-in protests in the coming weeks. After widespread protests against inflation and demands of subsidies on wheat and other essentials, the residents are frustrated and believe that reopening of trade routes would provide them some relief. In the coming weeks and maybe months, I'm seeing a refugee crisis developing because people desperate for daily essentials are not going to shy away from Pakistani army bullets, and they are going to brave those bullets, and they are going to, this is my perception, they are going to try and attempt to at least go and sit at the line of control where the checkpoints are and where the gates are. Amjad Ayub Mirza also opines that food crisis is going to worsen in coming times. The desperate situation has triggered a chaos in the illegally occupied territory. This is a crisis that is now developing very fast, and since there is a political crisis going on in Pakistan, I think that this crisis of food in POK is going to get worse. For over 7 decades, Islamabad has been persecuting the residents of POK and pushed them into a quagmire of distress and poverty. The region has witnessed a series of anti-Pakistan protests
in the last year and would continue to do so unless some transformational development happens in the region. Moving on. Providing digital literacy and a holistic development to women and girls residing in the remote villages in the Union Territory of Jammu and Kashmir, the Indian Army conducted a basic computer course in the border district Aknoor. The government and the Indian Army are relentlessly working towards empowering women and every member of the society with the latest technologies to realize their dream of digital India. Take a look. Spearheading its Digital India mission in the Union Territory of Jammu and Kashmir, the government has reached out to even the last village on the zero line. With a vision to transform the Union Territory into a digitally empowered society and knowledge hub, the Indian Army, along with the government, organized a 3-month basic computer training course for the women and girls at a government school in Milandi Khui village in the border district Aknoor. Over the course of the program, the girls learnt about computer hardware and software, internet browsing, email communication, Microsoft Office and several other digital skills. ये एक बहुत अच्छी पहल है इंडियन आर्मी की तरफ से। अब बच्चे छोटे हैं, गरीब परिवार से हैं और ना तो ये इतनी फीस भर सकते हैं, ना ही इतना दूर आ जा सकते हैं, इतना ट्रैवल भी नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल जीरो लाइन पे है। अब इनको यहीं पे स्कूल में ही सब कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं, ये और भी अच्छा है इनके लिए। हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर का आयोजन हुआ था, आज हमें उसके लिए सर्टिफिकेट मिले, जिसके कारण हम आगे जाकर कुछ नौकरी कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। The course was organized under Indian Army's Operation Sadbhavana, a goodwill initiative aimed at bringing development to the remote villages situated near the line of control. For several years, Operation Sadbhavana has garnered much adulation and praise from the residents for providing constant support in infrastructure growth, education, health facilities and other development projects in the valley. तो यहाँ पे आके मैंने देखा कि इंडियन आर्मी जो है वो उन्होंने 90 दिन का 3 महीने का कोर्स जो है वो बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है वो लोकल वुमेन्स और गर्ल्स के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। उसके साथ साथ हाई स्कूल मिलादी खुई के बच्चे भी जहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इन्होंने 3 महीने के लिए, उसके भी थे और रजवाल गांव के भी कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पे आए थे। तो बड़ा अच्छा लगा, बच्चे जो है वो उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है। मैं आज इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमने पहले 4 महीने इस कंप्यूटर कोर्स की डिमांड की थी और इन्होंने हमें दिया भी, और हमारे स्कूल के काफ़ी बच्चों ने कंप्यूटर कोर्स जो 3 महीने का सीखा और जो सिखाने वाली टीचर थी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बच्चों को सिखाया और आज बच्चों ने सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए इन लोगों ने, इंडियन आर्मी ने। तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो 0 पॉइंट पे आके बच्चों को स्कूलों में जहाँ पंचायतों में ये कंप्यूटर कोर्स दे रही हैं तो बच्चे बड़े लगन से सीख रहे हैं। The Indian Army's commitment in creating opportunities for underprivileged communities and empowerment of youth through education has brought a positive change in the border villages of Jammu and Kashmir. This computer course was just an initiative among hundreds of development projects the government has envisaged for the growth and progress of the residents in the Union Territory. The Government of India has achieved yet another milestone in infrastructure growth in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The construction of a 150-meter bridge in Ramhu in Pulwama district is just days away from its completion. The bridge will serve as a crucial link between nearly 80 villages of Pulwama and Budgam districts. It will significantly reduce the distance between villages in the 2 districts and facilitate smoother transportation and enhance economic activities in the region. Take a look. The roads and bridges are the symbols of growth and prosperity. In line with its efforts to connect each and every village of Jammu and Kashmir to the main towns and cities, the Government of India is developing roads and bridges at a pace never seen before in the Union Territory. The government has achieved yet another milestone in road infrastructure development
with construction of a 150-meter bridge in Rahmu in Pulwama district. The bridge will serve as a crucial link between more than 80 villages of Pulwama and Budgam districts. जो रहमू का ब्रिज है ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है, 150 मीटर का स्पैन का ब्रिज है, काफ़ी बड़ी इलाके को कनेक्ट करता है, स्पेशली पखरपुरा, बडगाम, सारी शरीफ और कम से कम मेरे हिसाब से 80 से 100 गाँव इस पर मुनसर होंगे। ये नाले रुमशी पे ये ब्रिज बन रहा है जो कि 2014 के फ्लड्स में डैमेज हुआ था। तो ये जैसे कि आपको पता है कि इस ब्रिज पे काफ़ी शदुमत से काम जारी है, सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, एक स्लैब भी ले हुई है। इसका जो है ये JTFRP प्रोजेक्ट है, फंडेड बाय द JTFRP, उसमें है 25 करोड़ और 2597.9 यानी कि करीबन 26 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें करीबन इस वक्त 70% के करीब काम कंप्लीट हुआ है। तो एक स्पैन में हमने स्लैब भी डाल दिया, अब 2 स्पैन रह गए हैं, उन पे भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि बाय एंडिंग मार्च अप्रैल तक हम उसमें स्लैब डाल के उसको पब्लिक के हवाले कर देंगे। The bridge has been a long pending demand of several fruit traders and residents of this particular region. The residents were elated with the development and see the bridge as a gateway to their prosperity and growth in coming years. आज भी इस सर्दी में -4-5 में भी आज इस पे 24/7 काम जारी है, तो हम इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि जिस भी लेवल पे जो भी लेवल इसमें मालूम है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सभी चीज़ें इस पे एक साथ काम कर रही है और इंशाल्लाह व रहमान हमें लगता है कि मार्च तक के जो पुल है ये मोटरेबल हो जाएगा, इस पे इंशाल्लाह व रहमान गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस पुल की एक अहमियत है सर, क्योंकि यहाँ का जो इलाका है इसका जो मेन इकॉनमी है वो फ्रूट है, हमारा जो बेसिक इकॉनमी हमारी लोगों की जो फ्रूट पे मुनहसर है, तो इसी रोड से हमारी गाड़ियाँ जानी होती है सीजन में, जो भी फ्रूट यहाँ से बनता है, चाहे ड्राई फ्रूट हो चाहे फ्रेश फ्रूट हो। लेकिन जो इस पुल के ना होने की वजह से थोड़ा सा हमें लॉस होता था, क्योंकि टाइम पे जो फ्रूट नहीं पहुँचता था। लेकिन इंशाल्लाह रहमान हम होपफुल है, हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के कि उन्होंने हमारी जो ये पुकार थी काफ़ी साल से, ये उन्होंने सुनी और इंशाल्लाह रहमान नॉन स्टॉप इस पे काम हो रहा है। The locals were thankful to the government and commended the workers and engineers for carrying out the construction work even during the freezing temperatures in the valley. The bridge will significantly reduce the travel time for commuters between the two districts of Budgam and Pulwama. ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि ये पुल अब रिसेंटली बनने वाला है, ये जल्दी ही यहाँ पे शुरू होने वाला है, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसको। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये तकरीबन यहाँ 30-40 गाँवों का आपस में मिलाता है। और यहाँ पे जो दो ज़ियारत ऊपर है पखरपुरा और चार शरीफ का, ये भी सला पूरे इलाके को इससे मिलाता है। शोपियान डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पे, ये पुलवामा पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है और श्रीनगर से भी लोग इसी रास्ते से इसी पुल से गुजरते जाते हैं। The multiple benefits of improving road infrastructure in the region. For the general public, the project is nothing less than a boon. The unmatched pace of development and schemes directed towards the common man have boomed the economic activities in the region. The government has many such projects in the pipeline to develop the Union Territory as a beacon of India's growth and progress. The Government of India has launched several schemes in the Union Territory of Jammu and Kashmir to support farmers and the youth. The Pradhan Mantri Matsya Sampada scheme launched by the government has encouraged many farmers and the youth in the far-flung Kotranka Budal area of Rajouri district to take up fish farming as a potential source of income. Several youths and farmers have turned to trout fish farming in the area, and the sector is becoming highly popular source of income in the region. We have a report. Many traditional farmers and the unemployed youth in the Kotranka Budal area of Rajouri district are finding fish farming a potential source of income. Under the Pradhan Mantri Matsya Sampada scheme and Holistic Agricultural Development Program, farmers living in the remote areas of the Union Territory are receiving assistance and a 50% subsidy for setting up trout fish farming units in their localities.
The local farmers were thankful to the government and the fisheries department for introducing them to this potential business avenue. अपने डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें इस स्कीम से तारुफ करवाया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्पेशली मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें ये स्कीमें दी, जिसके तहत आज हमने अपना ये ट्रोट फार्म तैयार किया है, जो अभी तैयार नहीं हुआ लेकिन जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं सबको यही कहता हूं कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हों और अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो ट्रोट फार्म हमने तैयार किया है ये फल नहीं था उसके गवर्नमेंट का है वो, लेकिन ये हमने अपना ये जो मोदी साहब ने हमें दिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 50% पे दिया है, वो हमने ये अभी तैयार अभी प्लस्तर रहा है हमें। तो इसलिए मैं सबसे ये अपील करता हूं कि सब इसमें आएं और ये ट्रोट फार्म इसी तरह वो भी बनाएं और अपना रोजगार चलाएं। There are many farmers and the youth who have turned to the business of trout fish farming after getting encouraged by their peers and government officials who are running door-to-door campaigns to provide knowledge about government schemes in the sector. इन्होंने ये हैचरी का सिस्टम भी दिया है, बायोफ्लाक का दिया है, तो ये सारे सिस्टम जो है अब वजीर आजम साहब ने डोर टू डोर हर आदमी बना सकता है, उसके लिए अच्छा खासा पैसा रखा है। अब सिर्फ ग्राउंड पे वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसमें नौजवानों के अंदर बड़ी खुशहाली आई है। नौजवान हमारे पास हर वक्त आते रहते हैं, बड़ी अवेयर ले रहे हैं और किसान भी आ रहे हैं। यानी मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। इस स्कीम से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो असल में हमें इस स्कीम का पता नहीं था, ये हमारे ज़ोहर साहब हैं सर, तो इन्होंने हमें बताया। फर्स्ट टाइम हमें कुछ मालूम नहीं था, तो इसकी वजह से ये जब हमें मालूम हुआ इसके बारे में सर ने हमें सब कुछ बताया और फिर इसके बाद हमने ये कंस्ट्रक्शन शुरू की। उसके बाद इस बार तो मतलब हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो अभी हमने वो सीड वगैरह भी हमने डाला हुआ है, तो काम शुरू है। इंशाल्लाह आगे भी सर की अगर मेहरबानी रही तो हम आगे भी इसमें कंटिन्यू करेंगे। Government's holistic agriculture development program in rural districts of Jammu and Kashmir has helped a large number of farmers and youth to open trout farms in their localities. The farmers taking benefit from the centrally sponsored program are making good income in trout fish business. They sell their produce in not only the Union Territory but also other states of the nation. Given the environment and the running stream temperatures in the valley, trout fish can breed in large quantities and raceways make it further suitable for farmers for maintaining higher densities of fishes in the raceway tanks. हमारे जो दराल में बने ट्रोट के यूनिट बने तो लगभग 25 यूनिट बने हमारे। जो हमारे कोल्ड वाटर फिशरीज है वो ये बुद्धल में और दराल में और थन्ना मंडी में। तो हमारे जो ट्रोट यूनिट हैं उनमें से काफ़ी हमें प्रोटेक्शन मिल रही है। उसमें तकरीबन इसी महीने में 87,000 की मछली एक फार्मर ने बेची है। तो हमारे वो अच्छे फार्मर चल रहे हैं और हमने 26,175 जो सीड है हमने स्टॉक किया है। तो हमारे जो नए यूनिट हैं इस साल के वो 4 यूनिट वो हमारे HADP में वो तैयार हो गए। The government also provides free training to the farmers and youth who are interested in pisciculture. Through the launch of several schemes and skill development programs, the government aims to develop entrepreneurial culture among the youth and the society. The people in the Union Territory too are resonating with the goals of the government and embracing growth in every aspect of their lives. Chandigarh, a vibrant city in the states of Punjab and Haryana, pulsated with the fragrance of spring during its recently celebrated 52nd Rose Festival. The event showcased a rich array of flowers, including over 800 varieties of roses, which transformed the garden into a visual and aromatic feast. Take a look.
Chandigarh, the capital city of Indian states of Punjab and Haryana, reflects a unique blend of culture and traditions. Besides, its uniqueness is also evident in the diversity of the city. Being a cosmopolitan city, Chandigarh also indulges people of diverse cultures and ethnicities to foster a friendly bond between people by holding fairs and festivals on a regular basis. Authorities in the city recently held the 52nd Rose Festival, featuring 829 varieties of roses. Alongside the display of roses, the festival also featured stalls set up by institutes, followed by cultural programs and laser shows. The newly appointed mayor of Chandigarh, Kuldeep Kumar, expressed his joy upon watching the floral display. जो हमारा रोज फेस्टिवल है और पूरे भारत के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका कहना बिल्कुल सही है। ये रोज फेस्टिवल सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा चंडीगढ़ का त्यौहार होता है और फेस्टिवल ना हो के एक जैसे हम दिवाली और दशहरा मनाते हैं, इस तरह से हम चंडीगढ़ का एक त्यौहार है रोज फेस्टिवल वो मनाते हैं। और इस टाइम जो है मनाने का कारण यही है कि इस टाइम रोज बहुत ज़्यादा खिलते हैं और रोजों की सारी वैरायटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत मनमोहक दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। The 3-day annual festival garnered thousands of people who came to rejoice in the festive vibe with their loved ones. People also clicked pictures and selfies during the event. Additionally, they were also danced to the music of traditional folk songs with the performers. जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप इन किया तो सबसे पहले जो एंट्रेंस पे हर एक रोज़ के बारे में इतनी डिटेल में बता रखा है, कितने टाइप्स के रोजेस होते हैं। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई हैव गेट इन देयर। हमने जो यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल स्टॉल्स लगा रखे हैं, सभी इंस्टीट्यूट्स आ रखे हैं यहाँ पे, सारों ने अपनी अपनी आर्ट फॉर्म को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है। हम उनसे पूछते हैं कि आपने किस तरह बनाया, तो वो अपनी एक्सपर्टीज हमसे शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो सुन के बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत अच्छा लगता है। 8 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा बेसिकली हम 2 ईयर से हम यहाँ पे परफॉर्म करें, पर हमारे सीनियर्स जो हैं वो 8 साल से यहाँ पे बूथ लगा रहे हैं। A major highlight of the 52nd Rose Festival 2024 was the Zero Waste Zone, focusing on stability, creativity, novelty and inclusivity. Additionally, various stalls set up by self-help groups underscore the commitment to stability and community empowerment. बहुत ही लाइवली माहौल है और चंडीगढ़ की शान है रोज फेस्टिवल। ऐसे लग रहा है पूरा चंडीगढ़ उमड़ा हुआ है रोजेस को देखने के लिए और इसको एक फेस्टिवल के तौर पे मनाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। Such festivals not only provide a glimpse into India's cultural vividness, but also nurture a strong bond among people. Away from the chaotic lifestyle, they give individuals a break to restart their life. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.